Welcome all. So in this session, I'll discuss what exactly is stress strain diagram and the stress strain diagram indicating different points of mild steel because that is the most important stress strain diagram. So generally it will be asked in interview and also in examination. So recently some of my mark students requested me to make a video on stress strain diagram. So in this session I will try my level best to include each and every detail of the stress strain diagram, but please note down that in this video I'll start from the point where the load is being when the material is being loaded up to the onset of strain hardening. Matlab, when the strain hardening point is starting, I'll stop there. So from strain hardening to necking and fracture, I'll conduct in different video. Uske baad, then flow curve, Holloman equation, constitutive equation, all those I'll be discussing, which is very important from metal forming point of view. So in this session, in this video, I'll discuss complete details on yield point phenomenon. Why it is unique for structural steels like mild steel. You know, when the carbon is less than 0.3%, we observe in low carbon steels, we observe this phenomenon. So I'll discuss everything. What exactly is Cottrell atmosphere and what are Lüder bands and what is local yielding and what are structure strains. All these I'll be discussing in this session. So up to the beginning of strain hardening, then what is the effect of temperature on stress strain diagram, that also I'll discuss with all logical reasonings. Okay, my dear students, we have, so without wasting time, let us get into this. This is the stress strain diagram, and you know, strain is the cause of stress. So therefore, now the independent parameter is taken on x-axis and the dependent parameter is taken on y-axis. Excellent. So you know, my dear students, if you see atoms, they are something like there is an elastic region. So when you are loading the member, and you load lightly and release the load, it will come back to the original position. So that can be modeled as in between atoms something like a spring. So these are atomic bonds which are acting like spring. We can model. So you load the member not very heavily, but to some extent, up to some point of loading, the bonds are, you see, these something like stretching of a spring. It behaves in an elastic manner. Now, if you release the load, it will come back. Exactly. Now, it is observed that for most of the materials, the stress strain curve is something like this. Very good. Let's see what is the significance of this slope. Okay. Now, this point we call it as proportionality limit. It means up to this point from O to A, our stress is directly proportional to strain. Okay. Now, if I convert this proportion into equality, I will get one constant, and this constant you call it as modulus of elasticity or Young's modulus. Let us see the physical meaning of, the significance of this Young's modulus. Okay, sirs. Okay. It is a material property, and you know, stress by strain is equal to E. So therefore, dy by dx, here we have stress, here you have strain. So therefore, dy by dx, that means, so sigma minus 0 is sigma, epsilon minus 0 is epsilon. So d sigma by d epsilon, it is representing the slope of the stress strain diagram from O to A, and this is generally a straight line for most materials. So therefore, the slope is giving me the Young's modulus. What is the physical significance of Young's modulus? It is known as the stiffness of the material. What exactly is stiffness of the material? So what does high modulus of elasticity represent and what does low modulus of elasticity represent? Let us see. You know, my dear students, sigma by E is equal to Young's modulus. Okay. Stress can be written as, my dear students, load per unit area. Okay, no problem at all. Then what is strain? Change in length. I'm talking about the engineering strain. It is original length. Okay, change in length. So dl by l, that is equal to E. Excellent, sir. Now देखिए, तो load per unit deflection,
if it's something like spring force per unit deflection is stiffness. P by L is equal to AE by L. Okay, very good. Now let's take two different materials. Geometrically they are same. Absolute. अरे ये क्या हो रहा है रे? ये हाँ. Geometrically they are exactly same. What does geometrically same mean? Same length, same diameter, same cross section. Now this is material A and this is अरे यार ये क्या हो रहा है? Okay, this is material A and this is material B. Okay. Now let us load. So please note down that both are of same size. Dimensionally they are same and length is same, diameter is same. Now let us apply the load P. Excellent. Now observe here. My dear students, ध्यान से सुनो. देखो, P by delta L. Now you know some materials may elongate or deform more, some materials may elongate less. For example, if E is more, now this A area is same, length is same, the load is same. Now can I say this DL is inversely proportional to E? Yes. So P is same, E is same, E is same. So ये उल्टा हो जाएगा sir. The change in length or the deformation is inversely proportional to E. Therefore, if the stiffness is more, that means an Young's modulus is more, then the deformation will be less. So it is actually representing the physical significance of Young's modulus is the resistance of the material to actual deformation. If the Young's modulus is more, its resistance to the deformation will be more and the deformation will be less. So higher the slope, higher is the Young's modulus. Suppose I have a material something like this. So as this slope is less, its Young's modulus is less, it is less stiffer, it will deform easily, its resistance to deformation will be less compared to this. And one more thing, in interviews, if they ask you to draw stress strain diagram of mild steel, please see that this line is as close to y-axis as possible because it has higher Young's modulus. So therefore, now it should be drawn like this. Actually, my dear students, now I am stretching. So you know, you stretch a rubber band. How long do you stretch? Up to some extent. So you stretch and release. If it is within elastic, it will come back. Same like this. Now, after some time, the bonds are broken. Like rubber, you stretch a rubber band, it will break down. Means it loses its elastic property once you further increase the load. But this elastic behavior of a material can be divided into two regions. Initially, it behaves linearly. That is up to proportionality limit. So let me erase this because this is not required for me. Okay, sirs. Now, then afterwards, it shows non-linear behavior up to this. So this is A and this is B. So the elastic behavior can be split into two regions, O to A linear, A to B non-linear. But please note on that this A is known as proportionality limit and this B is known as elastic limit. But the difference between these two is very small. Hardly there is 2% error or 2% difference between these two. So for example, if you take mild steel, the difference between them is around 3 to 4 megapascal. So therefore, observe clearly. So this slope is constant only from O to A. But when therefore this proportionality constant is obtained between O to A. So please note down that Hooke's law is valid only up to proportionality limit. Regularly in our problems or numericals, we use up to elastic limit. The reason for that is these two are very close and it is very difficult to distinguish between these two. Therefore, there is the error will be very less even if I take up to elastic limit. But there is if the question comes up to what point you apply Hooke's law, it is only proportionality limit. But in answer, if the proportionality limit, elastic limits are given, you should select proportionality limit over. तो यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं है sir. Now the problem comes from this. यहाँ से once you cross the elastic limit, with the onset of plastic deformation, now we have to be very, very careful. So OAB is not a problem. So you understood the meaning of stiffness, everything. Very good, sirs. Now, let us conduct a tensile test. This test is conducted on universal testing machine.
And you know, the material is loaded, gradual loading. It is not a sudden loading. Gradually, I'm loading. ठीक है, sir. Now, observe here. मेरे प्यारे दोस्तों, when I taught you in material science, I told you very clearly, plastic deformation is nothing but moment of dislocations. See, God has made every material not ideal. हर एक material में dislocations तो रहेंगे ही. And I discussed clearly what is like Bravis lattice, then what is edge dislocation in my regular classes, what is screw dislocation, what is Burgess vector, all these I had discussed. So I will not go into the details of that. I think you have at least some idea. Chalo, koi baat nahi. So let us try to understand. Now we are crossing the elastic limit, further we load it exactly. But we are dealing with mild steel. It is observed that, तो अभी मैं क्या करता हूं sir, what I do is, already you have understood very clearly linear and non-linear elastic behavior. So मुझे पता है, लेकिन what I do is, I'll not show that difference, this is very small. Directly I'll show you like this. ठीक है sir. वेरी गुड. नाउ इसमें ही लीनियर नॉन लीनियर सब आ गए, दोनों क्लोज है. सो डायरेक्टली आई विल टेक दिस इज बी और ए, वॉट एवर इट मे बी, ओ ए बी. चलो कोई बात नहीं सर. नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर माइल्ड स्टील, इफ यू फर्दर लोड इट, अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज स्टार्टिंग. सो इट शोज समथिंग लाइक दिस. ओ माई गॉड. नाउ इस क्लास में, in this session, I'll be starting from this beginning of plastic deformation. Why it is rising? What is upper yield point? What is lower yield point? What is upper yield point? What is lower yield point? And what is this yield plateau? What is this yield phenomenon? All those I'll be discussing in this class. Chalo, koi baat nahi sir. Now observe here, my dear students. Listen now. You know, if you see this iron atoms, the atomic radius of iron atom is about 1.23 angstrom, if I am not wrong, around this value, atomic radius. You know, 1 angstrom is 10 power minus 10 meter, and the atomic radius of iron, and that of carbon is about 1.29, I think, if I am not wrong, 1.29. Chalo, no problem, 1.29, and that of carbon is about 0.71 angstrom. This is carbon. Now देखो, these are the iron atoms, and this is the void, this is the gap. देखो एक बार, this is the gap, this we call it as the void space, void, and the size of the void is about 0.53 angstrom. It is the void size. Void size. Void means this wala. Just एक बार observe कीजिए. What is the void size? It is very small. The gap is very small, but the carbon atom size is large. So one more thing, carbon cannot form substitutional solution, because substitutional solution form करने के लिए you know, Hume-Rutherford rule should be satisfied. That is, the difference in atomic radii should not be more than 15%. It should be less than 15% from this side or this side. So therefore, ये तो बहुत ही ज्यादा है sir. Carbon and iron very large, so it cannot form substitutional solution. मतलब carbon के place में iron cannot substitute. ये तो form होगा ही नहीं. So the only option available for the carbon to form a solution is interstitial solution. मतलब इस गैप में कार्बन को फिट होना है. And already you know the carbon size is more and the void size is less. तो क्या होगा सर? It is something like you are forcing in a small space. तो क्या होगा? It experiences compressive forces. So therefore it is a strained region. मतलब यहां पे our carbon is not at all comfortable. तो you know very well, if it is not comfortable, so आप भी किसी जॉब में कंफर्टेबल नहीं है, तो what will you do? You try to find a new comfortable job. Until मतलब ढूंढते ही जाएंगे, जब तक you are not comfortable, you will move on. That moving we call it as diffusion. Now carbon को मान लो
Imagine if this carbon gets some very good position where the place is more, definitely it will diffuse, it will go to that place. Now before that, let's understand this. Very good. Now देखिए sir, please understand, these are iron atoms. These are iron atoms. ठीक है. And please understand, this is, please note down, this is also iron atom. Don't think that ये लाल वाला कुछ अलग है. Iron atom only. ठीक है sir. Now look at carefully. ये सिर्फ हाफ प्लेन में है, नीचे कुछ है ही नहीं है सर. व्हाट डज इट मीन? दिस इज, एक देखो, एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. ये ऐसा है सर, इट इज लाइक दिस, लाइक दिस. सो ये पूरा लाइन है सर, दिस इज द एज डिसलोकेशन. ये पूरा लाइन है सर, ये पूरा लाइन है. ठीक है, ये वाला नीचे नहीं है सर, इट्स नॉट देयर एट द बॉटम. सो इट इज इन द हाफ प्लेन, टॉप हाफ प्लेन. सो क्या हो रहा है सर? So there is a dilatation. What does dilatation mean? Increase in the volume here. Let me explain very clearly. तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सर. प्लीज ऑब्जर्व. सो लुक एट नाउ, व्हाट वी डू इज, ये है. अब अपर हाफ में लेट मी पुट सम, ओके, ये हाफ में हाफ पुट, देखो एक बार. व्हेन आई पुट इन दिस हाफ, what is happening? So ये गैप में क्या दिख रहा है सर? ये गैप बढ़ गया सर, बढ़ गया. So this gap has increased. So now as the place is more, this is known as dislocation side. ये perpendicular पूरे atoms है, ये पूरे iron atoms, और इस लाइन पे है. This is the dislocation line, dislocation, edge dislocation, edge dislocation. इसके नीचे पूरा place भरा हुआ है, बढ़ा हुआ है सर. Look at below this, the place has increased. देखो देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो ये हाफ प्लेन है, तो यहां पे प्लेस हैज इंक्रीज. चलो ठीक है सर. नाउ व्हेन द प्लेस हैज इंक्रीज, यू नो वेरी वेल, द कार्बन एटम्स विल सिट देयर. नाउ दे डिफ्यूज फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस टू द डिसलोकेशन साइट. तो अब होता क्या है ना, बिकॉज यहां पे अच्छा खासा सा स्पेस है, सो मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स they try to come and occupy this region जहां जहां dislocations है, because you cannot have a material without any dislocations. वो तो रहेंगे, आपके dislocations तो रहेंगे ही रहेंगे. So therefore, so they find suitable space below this. इसके नीचे पूरे rich carbon atmosphere is formed. That rich carbon atmosphere area को बोलते हैं, you know, like Cottrell cloud और Bilby cloud. Cottrell एटमॉस्फेयर और बिल्बी एटमॉस्फेयर. तो इस रीजन में देखो एक बार, इस रीजन में कलर चेंज करता हूं सर. इन दिस रीजन नाउ, इस रीजन में द साइज इज मोर, सो एज द गैप इज मोर, कार्बन एटम्स विल डिफ्यूज फ्रॉम इंटरस्टिशियल साइज टू यहां. लेकिन यहां आने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी शो यू वेरी क्लियरली. आराम से, टेंशन मत लेना सर. इधर देखो, इधर देखिए सर. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस. देखो, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन. ये देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ स्क्रीन है, ये पूरे अलोंग दिस. तो पूरे कार्बन एटम्स इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे सर. नाउ ऑब्जर्व हियर, दिस इज द वन, एंड दिस इज द कार्बन रिच एटमॉस्फेयर. दिस इज द कार्बन रिच एटमॉस्फेयर. So in 1949, Cottrell and Bilby observed this phenomenon. अब बोलता हूं what is that phenomenon, we'll discuss. So that's why in the honor they gave after like this, they called it as Cottrell atmosphere. These are the foreign atoms. What do you mean by foreign atoms? These are the main host atoms and these are the guest or foreign atoms. So this is all carbon, 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 carbon. So this is a carbon rich zone. तो actually क्या होता है, the binding energy between carbon and dislocations is about 0.5 electron volts. मतलब there is a binding energy, electrostatic forces दोनों में डेवलप हो जाएंगे. किन दोनों में? These dislocations and carbon atoms. एक बार बाइंडिंग एनर्जी डेवलप हुआ, it's not easy to move the dislocation. Dislocation is nothing but plastic deformation, means motion of dislocations. So if you want plastic deformation, these dislocations should move. लेकिन these carbon rich environment, there is a binding energy, electrostatic forces. Oh my God. देखिए एक बार मित्रों, एक बार देखिए. Yes, yes, yes. This is the dislocation site.
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, पूरे लाइन पे है, और ये पूरे दिस इज द क्लाउड की तरह फॉर्म हो रहा, क्लाउड की तरह। देखो कार्बन रिच एटमॉस्फेयर, वी कॉल इट एज कॉट्रल क्लाउड, इसको बोलते हैं कॉट्रल क्लाउड, COTTRELL, एंड विल बी ये वाला दिस रीजन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या करेंगे सर? नाउ आई वांट टू डिफॉर्म। Already, as I told, there are electrostatic forces, and we have to overcome that. That's why, my dear students, you have to use extra force. You have to give extra stress to cause the motion of dislocation. And such a situation is known as पिनिंग ऑफ डिसलोकेशंस, क्योंकि ये डिसलोकेशन कहीं आप पिन मार के देखो, मुंह करके देखो, नहीं। सो व्हेन यू अनपिन द मोशन इज इजी। सो दिस इज पिनिंग ऑफ डिसलोकेशंस ड्यू टू कॉट्रल एटमॉस्फेयर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिसलोकेशंस कैन नॉट मूव फ्रीली। अब क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए सर? नाउ आई हैव टू मूव तो करना ही है, देयर हैज टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, so therefore extra force or extra stress is given. That's why, my dear students, if you observe clearly, एक बार देखना इधर, if you observe clearly, एक सेकंड, इसको पूरा इरेज ही कर देंगे सर। That's why now already you know, one second please, let me take this. देखो अब इलास्टिक को तो छोड़ ही दो सर, इलास्टिक को छोड़ दो। अब क्या होता है ना, देयरफॉर यू नीड मोर स्ट्रेस, मोर स्ट्रेस, मोर स्ट्रेस यहां तक। एंड व्हाई दिस एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड? तो ये तो इलास्टिक हो गया सर, व्हाई दिस एक्स्ट्रा स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड? टू पिन डिसलोकेशंस, टू ओवरकम कॉट्रल एटमॉस्फेयर, टू ओवरकम कार्बन रिच एनवायरनमेंट, टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दैट्स व्हाई यहां तक राइज हुआ, एंड दिस इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। इसके बाद क्या होगा? डू वी नीड मच मोर हायर? ध्यान से सुनिएगा सर। इसके बाद आफ्टर दिस कॉट्रल एटमॉस्फेयर इज ब्रोकन, देयर इज नो कॉट्रल एटमॉस्फेयर, वेरी गुड। नाउ कैन आई से द रोड इज फ्री फॉर डिसलोकेशंस टू मूव? होपफुली। देखो एक बार, जस्ट देखो, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार देखना, इस जोन से, माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, इस जोन से बाहर आ गए। सो नाउ दिस डिसलोकेशन हैज मूव्ड आउट ऑफ दिस, इससे बाहर आ गया। सो वंस इट मूव्स आउट ऑफ, देखो इट इज इनिशियली, आराम से देखना सर, प्यारे बंधुओं, इधर देखो रे, क्या बोला? इधर देखो रे, हाँ। सो इस जोन में दीज आर obstructing the motion of dislocations. Once this dislocation moves to this new position, therefore ये उधर ही रहेगा और ये इधर मूव करेगा। सो इधर देखना एक बार। Now I'll show you that. यस, कहां है रे मेरे बंधुओं? यस, इस जोन से बाहर आ गया। सो नाउ यू टेल मी, द रोड इज स्मूथ फॉर द डिसलोकेशंस टू मूव। ये आके इसको अटैच करेगा, देखो व्हेन इट इज मूविंग, इसको ब्रेक होके इसको अटैच करेगा, फिर व्हेन इट कम्स टू दिस, ये इसको अटैच करेगा। लाइकवाइज डिसलोकेशंस मूव, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक। इट्स समथिंग लाइक अ स्मूथ रोड, स्मूथ रोड, स्मूथ रोड। इसीलिए उसके बाद फ्रॉम दिस हेवी फोर्स इज रिक्वायर्ड। वंस यू ओवरकम, now you don't need heavy force, because already we have overcome those Cottrell atmosphere position, we have overcome those electrostatic forces, uske bahar aa gaye, so you need less force to cause the deformation, to move the dislocations. That's why once you cross the upper yield point, suddenly there is a drop in the stress, because it is unpinning of डिसलोकेशंस। यहां पे डिसलोकेशंस पिन हो गए थे, अब एक बार मूव हो गया, दिस इज अनपिन। देखो एक बार, रास्ता कितना स्मूथ है सर। जस्ट आप स्लाइड करो, ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस, इट कैन मूव, इट कैन मूव। ये आके इधर अटैच करेगा, उसके बाद ये आके इधर इसको अटैच करेगा, लाइकवाइज इट मूव्स। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, इधर देखो, उसके बाद देयर इज अ ड्रॉप, देयर इज अ ड्रॉप। अरे ये पेन क्यों नहीं लिख रहा है? ये भी आपकी तरह ही है। उसके बाद देयर इज अ ड्रॉप, एंड इसको बोलते हैं यील्ड ड्रॉप। व्हाई देयर इज अ ड्रॉप? बिकॉज नाउ वी हैव ओवरकम द कॉट्रल एटमॉस्फेयर, नाउ द रोड इज फ्री। ये मत सोचना द रोड इज फ्री, नहीं सर, मरने तक स्ट्रगल करना ही है। एंड दिस वी कॉल इट एज लोअर यील्ड पॉइंट, एंड दिस वी कॉल इट एज यील्ड ड्रॉप। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रॉम हियर ऑन
it will be something like this, almost horizontal. Then afterwards it increases. ये एक्चुअली दिस इज द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग. इसका खेल बाद में देखेंगे, बिकॉज इसका खेल होता है डिसलोकेशंस का इंटरैक्शंस. व्हाट इज हैपनिंग, ट्रैफिक जाम के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा डिसलोकेशन इंटरैक्शंस. अभी इसको छोड़ दो. नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाई इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, व्हाई इट इज, इसको बोलते हैं यील्ड फिनोमिनन. सो in examination, if he is asking which one is to be taken as the yield point for mild shell, it is not the upper yield point, but you should take lower yield point. The reason is it is a transition. This occurs only for small amount of time, but this occurs for a longer time. So yield point in mild steel, it's not this yield point, but you should take this as the yield point because it lasts for a longer time. It is only transition. ये सिर्फ कम समय तक रहेगा. Leave it, sirs. Now the question is, why it is not like horizontal? Why it is something like wavy? Very good, sirs. Let me answer to this. So actually, once you reach the lower yield point, it will be something like this. Maybe horizontal also, maybe something like this. What is the reason for this? The reason is actually, my dear students, एक बार देखना, you know the microstructure. There is a clear difference between crystal structure and microstructure. Crystal structure बहुत अंदर जाना पड़ता है, बहुत magnification चाहिए. But now I am talking about the microstructure. How do you get microstructure? I think in lab you might have done. क्या करते हैं सर, हम कुछ etching करते हैं केमिकल से, समझ गए, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं. Very good, sir. Now, so if you see the microstructure, there are different grains. Grains are oriented in different directions. अलग अलग grains. इधर देखो. So इधर इसका orientation ऐसा होगा, इसका शायद ऐसा होगा, इसका कुछ ऐसा होगा. Different grains. And you know, my dear students, when you are loading, the load may be conducive or favorable for some grains to deform. So dislocations in that grain may start moving, may be undergoing plastic deformation. That is motion of dislocations. ऐसा नहीं कि सारे grains एक ही तरह. It's not a single crystal. It's a polycrystalline material. तो different grains are oriented in different directions. So load, अब देखो मैं load apply कर रहा हूँ horizontal. ये किस direction में हो रहा है? ऐसा हो रहा है. Is it moving in vertical direction? No. So therefore, depending on the orientation of grains and the direction of loading, some grains are conducive or favorable for the deformation. तो पहले locally कुछ grains में शुरू होता है deformation. And you know very well, I taught very clearly, ये slip planes में जहां पे maximum shear होता है. You know, for tensile loading, for axial loading, it is at 45 degrees to the axis of loading. So अगर मेरा, मान लो my dear students, अगर मेरा, I taught in class why it is like this also, dumbbell shape, all this I had explained, and this is parallel length and gauge length between extensometer में जो भी points है वो है. चलो कोई बात नहीं सर. अब हम लोड अप्लाई किए, and you know very well, some local points पे, मतलब microstructure में wherever it is conducive, wherever it is favorable, वहां से शुरू होता है deformation locally. So definitely you know very well, इस axis पे the shear stress is maximum at 45 degrees. तो maybe in this direction or maybe in this direction 45 degrees पे. तो यहां से लोकली माइक्रोस्ट्रक्चर में वॉट एवर द ग्रेन इज फेवरेबल, उस ग्रेन से लोकली शुरू होता है. देन वंस इट टचेस, वो डिसलोकेशंस व्हेन दे टच द ग्रेन बाउंड्री, तब क्या होगा सर? बैक स्ट्रेस जनरेट होगा. बिकॉज ऑफ दिस यू आर सीइंग सम फ्लक्चुएशंस इन दिस. तो ये इसको बोलते हैं ल्यूडर बैंड. इसको क्या बोलते हैं? ल्यूडर बैंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ, ये नहीं हुआ, एंड इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन. Oh my God, it's not different, क्योंकि some grains are suitable, some grains are not suitable. जहां फेवरेबल है वहां पे डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, जहां पे नहीं है वहां नहीं हुआ. मान लो ये फेवरेबल है इधर, ऐसा, अब ये क्या होगा सर? ऐसा स्ट्रेच होके लुक एट 45 डिग्रीज पूरा देखो. नाउ फ्रॉम हियर देखो एक बार, लाइक दिस, ये गिर गया. अब पूरा देखो, दिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ ल्यूडर बैंड. अब स्प्रेडिंग ऑफ ल्यूडर बैंड्स होके यहां कंप्लीट वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा. Then now it is homogeneous. यहां से पूरा you don't see any ups and downs because it has spread through complete material. So these are known as Lüder bands. And you know my dear students, इसको क्या बोलते हैं? Structure strains भी बोलते हैं.
This is very bad in case of metal forming because surface finish will be very poor if you see. मैं आपको एक दिखाता हूं सर, देखो एक बार. So यहां से पूरा देखो लोकल यील्डिंग होने के बाद now complete this Lüder band has spread तो throughout the volume. यहां से अब homogeneous deformation शुरू होता है सर. From here on there will be homogeneous deformation. देखो एक बार, let me show you. Look at sir. देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ लोडिंग. ये एक्सिस ऑफ लोडिंग तो आपको दिख रहा है, ये दीज आर ल्यूडर बैंड्स, मतलब एक स्ट्रेचर मार्क्स दिखते हैं सर. तो आपको शो करता हूं सर, यू विल जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू, यू विल अंडरस्टैंड परफेक्टली सर. आराम से, टेंशन न लेना. तब तक मैं पानी पी लेता हूं. इस डायरेक्शन में लोड है, लोड है, लोड है, लोड है. अरे कहां गए रे? अरे देखो लोड है, ल्यूडर बैंड स्प्रेड हो रहे, देखो इधर से स्प्रेड हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ल्यूडर बैंड्स आर स्प्रेडिंग. देखो स्प्रेड हो रहा है, 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 स्प्रेड हो रहा है. नॉन होमोजीनियस, ये यील्ड नहीं हो, ये यील्ड हो गया. So therefore non-homogeneous. Now it is spreading completely. Now it is spreading completely. Now it is spreading completely. देखो एक बार पूरा स्प्रेड हो गया, पूरा स्प्रेड हो गया. एक बार दोबारा दिखाता हूं. Let me show you again. We have loaded like this at 45 degrees. ये क्या हो रहा है रे? देखो देखो how it is spreading. Just observe from the bottom, from the top, non-homogeneous. These structure marks are easily visible. Surface finish will be poor. लेकिन इसका भी इलाज है सर. We'll see that. Don't worry. गाना भी आ रहा है. वेरी गुड. नाउ इसको बंद कर देंगे. विल गो बैक. कहां गया रे वो नोट वाला? हाँ देखो ये हो गया सर. नाउ व्हाट वी डू, होप यू अंडरस्टूड दिस. वेरी गुड सर. कुछ और बात करेंगे सर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस. मैं ये पूरा इलास्टिक एक ही इसमें शो कर रहा हूं, नॉन लीनियर बिहेवियर नहीं शो कर रहा हूं सर. सो okay, this is upper yield, this is lower yield, and you have seen why. एंड इटमें देखो ये जर्क्स के कारण दूसरे भी हो सकते हैं. नॉन होमोजीनियस यील्डिंग और इन द मोशन ऑफ डिसलोकेशंस, माय डिसलोकेशन में एनकाउंटर सम कार्बन एटम्स, मे बी न्यू क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, इसलिए थोड़ा जर्क हो सकता है. वेरी गुड सर, वेरी गुड. लेकिन याद रखना सर, अब देखो नाउ आई हैव लोडेड मटेरियल अप टू दिस. ध्यान से सुनो, यहां तक लोड किया, देखो लोडेड 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 इलास्टिक. अब देखो यील्ड हो गया, अपर यील्ड ड्रॉप ड्यू टू क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, गायब, यहां गायब, देन लोकल यील्डिंग, देन लोड. दिस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. अब यहां लोड डाल के छोड़ देना सर. यू लीव इट, यू लीव इट, यू लीव इट. वंस यू लीव इट, definitely इसमें there is some plastic, sorry, there is some elastic component also involved. So इसी लाइन पे, this is the elastic line. So इसी लाइन से if you are unloading parallel to this line, it will come back. This is unloading. Now this much strain is left in the material. We call it as permanent strain. अब यहां से लोड करो सर. तुरंत लोड करना. तुरंत means you have loaded, deformed plastically and unload it. Immediately you load it. Don't give any time. लोड करो. अगर लोड कर रहे हैं, देखो you will not find any yield point. डायरेक्ट ऐसा यूनिक yield point नहीं रहेगा. यहां से फिर इलास्टिक, देन प्लास्टिक. You don't find any yield point if you load it immediately. The reason is already, ध्यान से सुनो सर, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा सर. I'll explain. Already ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, इसको डिफॉर्म किया. देखो वी हैव ओवरकम क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, क्वार्टरल ओवरकम हो गया और डिफॉर्म करके छोड़ दिए. देखो यहां तक, नाउ इट इज डिफॉर्म एंड लेफ्ट. तो क्या होगा सर? एंड immediately you are loading. Immediately when you are loading, it is not encountering any quaternial atmosphere. There is no reformation of quaternial atmosphere. That's why you are not finding unique yield point. क्योंकि यहां पे we have overcome this. देखो एक बार समथिंग लाइक दिस. मैं कलर चेंज करूंगा सर. मजा. देखो ऑलरेडी क्वार्टरल इज ओवर, उसके बाद डिक्रीज हुआ.
देन ये पूरा होगा, यहां तक लोड किए। अब इस रीजन में यू डोंट, इससे फॉरवर्ड जा रहा है तो देयर इज नो कॉटल, अनलोड किए। नाउ लोड इट, व्हेन यू आर लोडिंग further, when you are loading, dislocations are moving and thereby इधर देखो elastic, then dislocations are moving in the path of dislocations there is no Cottrell atmosphere, that's why आपको yield point नहीं मिलेगा। so therefore that's why we use this, क्योंकि अब yield point नहीं मिल रहा है का मतलब no structure strain marks, no Lüder bands, तो इसलिए इन मेटल फॉर्मिंग जब आप डीप ड्रॉइंग करते हैं, पहले रोलर्स में पास करके रोल करवा के आप ये कर लेके उसके बाद हम डीप ड्रॉ करते हैं, सो दैट यू डोंट फाइंड दीज स्ट्रक्चर स्ट्रेन मार्क्स, सो दैट ये अवॉइड करते हैं। सो वी यूज दिस फिनोमिनन। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सर। वेट, नाउ वन मोर थिंग सर। तो ये हो गया सर, दिस इज ओवर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट वी डू इज, बहुत गहरा है सर। अब देखो व्हाट वी डू इज वी लोड इट, तो समझ में आया, वेरी गुड। नाउ अब क्या करेंगे, वी लोड इट, ठीक है, सुनो, अब अनलोड इट, ठीक है, अनलोड कर दिए। नाउ वेट फॉर सम टाइम, डोंट लोड इट इमीडिएटली, बहुत देर तक वेट करना। एज बुढ़ा हो गया, एज मतलब इसको टाइम दो। व्हेन यू आर गिविंग टाइम, न्यू डिसलोकेशन साइट आ गया। जब आप टाइम दे रहे, न्यू डिसलोकेशन साइट आएगा। कार्बन क्या करेगा, व्हेन यू आर गिविंग सफिशिएंट टाइम, कार्बन देखेगा, बोलेगा मेरे पास नया जगह मिलेगा, डिसलोकेशन तू यहां से यहां जाता है, मैं फिर अपने प्लेस में आऊंगा, ये मेरा कब्जा है। एंड देन अगेन इट फॉर्म्स, क्योंकि आप समय दिए, यू हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। सो कार्बन एटम्स वेर इनिशियली स्लीपिंग, तो आप मतलब सडनली समवन सेड देयर इज अ न्यू डिसलोकेशन साइट, देन सब जाग गए। तो तब तक हमने यील्ड नहीं कर रहे, वी हैव गिवन सम टाइम, हम रश में लोड क्यों डालते हैं, मेरा मशीन थोड़ा टाइम देंगे। आप जाके कहीं खाने के लिए गए, पॉलिटिकल बातें करते बैठे, 2-3 घंटे हो गए, उसके तब तक 3-4 घंटे जो भी हो गया। अब नाउ देयर इज अ न्यू प्लेस, देयर इज अ न्यू डिसलोकेशन, ये कार्बन एटम्स पूरे नए पाएंगे। नाउ यू नो, यहां से लोड करो, अब इस पोजीशन पे है, यहां से लोड करो, व्हाट विल हैपन, सो द न्यू साइट पे कॉट्रल एटमॉस्फेयर, री-कॉट्रल एटमॉस्फेयर इज फॉर्म, इसलिए अगेन यहां पे सेम इसकी तरह आएगा रे बाबा। सो व्हेन यू आर गिविंग सफिशिएंट टाइम, new Cottrell atmosphere will be formed and the same yield phenomenon will be observed. This is known as strain aging. Suppose you load it and unload and immediately load, you don't find, because carbon atoms do not get sufficient time for diffusion. But yahan pe, when the sufficient time is given, carbon atoms start diffusing and new Cottrell atmosphere is formed, and again you get the new yield point phenomenon. Very good, sirs. The last one for today, that is effect of temperature. Let's see, my dear students. ध्यान से सुनो. This is at the room temperature, RT. Now let us increase the temperature. ध्यान से सुनिए सर. Let me increase the temperature. Color change करेंगे सर. Let me increase the temperature. Say about 400 degrees centigrade. And at about 400 degrees centigrade, my dear students, you will find something like this. And at about 500 degrees centigrade, you will have something like this. Let us see the reason. ऐसा क्यों हो रहा है सर? Let's see. You know, my dear students, before recrystallization temperature, what is recrystallization temperature? Strained material में अगर आप, you know, my dear students, अब अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, तो what will happen? New grains are formed, new microstructure. I am not saying crystal structure, I am saying microstructure. There is a big difference between crystal structure and microstructure. मैं बात कर रहा हूं microstructure का. So once the strained material में आप heat कर रहे हैं, after some temperature, the new grains start forming and thereby new microstructure is formed.
तो बिफोर द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये स्लोप चेंज नहीं होगा, यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा. सो रिक्रिस्टलाइजेशन के बिलो टेम्परेचर, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यू डोंट फाइंड अप्रिशिएबल चेंज इन द यंग्स मॉडुलस, इट विल बी सेम, बट यू फाइंड अ ड्रॉप इन द यील्ड पॉइंट एंड यू फाइंड अ ड्रॉप इन द अल्टीमेट. बट ये सेरेशंस क्यों आ रहा है ये जानना जरूरी है सर. The reason is because at room temperature, after this local yielding, you are finding a smooth curve. But at some high temperature, you are finding out these serrations. Do you know the reason? The reason is pinning, unpinning, pinning, unpinning. What does it mean? इसका मतलब क्या हो रहा है? डिसलोकेशन का वेलोसिटी और डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स का वेलोसिटी मैच हो रहा है. जैसे ही डिसलोकेशन मूव हो रहा है कार्बन का डिफ्यूज होने के कारण, बिकॉज यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द डिफ्यूज जो डिसलोकेशन का वेलोसिटी है एंड द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन, कार्बन का वेलोसिटी, इट इज ऑलमोस्ट मैचिंग, ऑलमोस्ट मैचिंग. सो क्या हो रहा है, जब डिसलोकेशन मूव हो रहा है कार्बन डिफ्यूज होगा, फिर कॉटरेल एटमॉस्फेयर फॉर्म होगा, फिर उसको मूव करेंगे डिसलोकेशन, फिर कार्बन डिफ्यूजन वेलोसिटी, फिर मतलब पिनिंग अनपिनिंग, पिनिंग अनपिनिंग, क्योंकि द वेलोसिटी, यू नो माय डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स इज डोमिनेंट. मतलब क्या हो रहा है, तो डिसलोकेशंस मूव हो रहे हैं, कार्बन एटम्स डिफ्यूज होते जा रहे हैं, डिसलोकेशन हो रहा है, कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो अगेन अनपिन कर रहे हैं, हाइयर क्या बोलते हैं स्ट्रेन, हाइयर स्ट्रेस, फिर अगेन इट ओवरकम्स, अगेन डिफ्यूजन, कार्बन आ रहा है. तो इसीलिए दैट न्यू कॉटरेल एटमॉस्फेयर फॉर्म होते ही जा रहा है. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस जर्क्स. Now you may be wondering, sir, why at lower temperature, higher temperature, और हाई करो, मतलब ये अब मान लो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है, जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो you are finding out a decrease in slope. The reason is this Young's modulus is representing the stiffness of the material. At higher temperature, you know my dear students, atomic bonds weaken, तो क्या होगा, stiffness कम होगा. At higher temperatures, you know, lattice vibrations increase, stiffness kam hoga. At higher temperatures, you know, atomic bonds become weak. When they become weak, the stiffness will be less. When the stiffness is less, the Young's modulus is also less. तो higher temperature पे recrystallization से ऊपर वाले पे ये slope नीचे आएगा. But now the question is, why these serrations are not formed? The reason is, you know, there is a, at higher temperatures, you know, it becomes a bit soft and dislocation motions are so smooth that you don't find any pinning unpinning का effect उतना dominant नहीं होता है. So dislocations move smoothly and thereby you don't find pinning unpinning unlike this. So at higher velocity the dislocation motion is dominating and thereby it is not encountering pinning unpinning. That's why it is becoming smooth. But why the yield or the ultimate is decreasing? Because at higher temperature material becomes soft and the strength decreases. That's why it is dropping. So thank you my dear students. And in the next session, I'll be talking about the different regions. Kindly share your views on this session. If it is good, I'll continue. Okay, thank you.